So hey guys, welcome back to another video. This is Sham Sharma, and in today's video we are going to build a contact app from the scratch. So before building that app, I'm going to show you that app we are going to build, that how it would look like. So that you can see, hope you would able to see the screen. And this is the app I'm talking about, has the telephone icon. That's name is a contact app. Once I would click over it, first the splash screen comes. So this is the cool splash screen you would see. After the splash screen, you will navigate to the home screen, and these are the many contacts as you can see on the screen, right? I have saved already these contacts. And if I talk about the features of this app, so on the top as you can see, the first feature, that the icon you can see, right? If I would click on that icon, it will sort all the contacts. So let's see it here. This is the icon I'm talking about here. As I would click over it, the last contact on the top, right? The last contact has come on the top and the first contact has gone on the down. So this is how you can sort all the contact on the basis of the date. Okay, so it's short on the basis of the date the contact has saved. So once again I would going to uh, click over this sorting icon, right? So that's how you can sort all the contacts. So now if I would click over this, the add button here, as you can see, if you want to add any other contact, so you have to click on this floating button. So as I would click on this floating button, you can add more contacts into it. Just like if I want to add like Alex is a person, Alex Sharma, right? And the number I'm going to give it a random, and then Alex, its Gmail ID I'm going to give uh, Alex at the rate, okay, Alex at the rate gmail.com. This is the Gmail ID I have given here. If you want to add the icon here, if you want to add the image here, you have to click on the add icon, and here you can add any one of the image. Just like if I would click over this is the image, the profile picture has saved here. And if I would click over the save, as I would click over the save, the contact will be saved. Okay, on the main screen you can see right here the Alex. Where is the Alex? This is on the top has come, right? This the number we have given, alex at the rate gmail.com. All the things has saved. If I want to delete any one of the contact, then what I have to do, just here you can see this is the red delete box, right? If I want to delete, suppose that Chris Local, so I have to just click over this delete icon and clicks, and that contact has deleted. If I want to delete Rahul Kumar, right, so I have to just click on the delete icon. So Rahul Kumar has deleted. If I want to delete like if I want to delete the John Sharma, so I have deleted this as well. So this is how you can delete multiple contacts at the same time. If you want to update any one of the contact, then how you can update, you have to just simply click over any one of the cards. Suppose like I want to update this Aman, right? So I have to click on the Aman, and here you can update. Here I'm going to give it a name. I'm going to give it a Shivam, right? Sharma, okay. And here I'm going to give it a Gmail, Shivam, right, at the rate gmail.com. So as I would click over here, save, and thus you can see Shivam Sharma, Shivam at the rate gmail.com, and number has saved, everything has saved, right? So this the contact has updated. So that's how these are the multiple features inside this app you can see. And now I'm going to talk about what are the technologies we have used inside this app to build this. So first we have used the Kotlin language, and second thing that we have used is the Jetpack Compose, and the third thing is the Android distro. Obviously we have to use to build this Android app, and the fourth thing that we have used is the room database. Okay, so and the different technologies also we have used, the standard technologies to build this app, like a MVVM, clean code architecture, different dependencies we have used, right? These all of the things, if you want to know, then you have to read the description. All of the things, all of the technologies I have given in the description in the brief format. Now if I talk about the source code, that also I have given in the description. If you get any value out of this video, don't forget to hit a like and subscribe button. So let's start building our app. So after selecting the Jetpack Compose activity in the Android Studio, our main activity will look like this. And the error you can see right here, inner padding, this will not interrupt while building the application, so don't worry about that. Okay, so we haven't used this inner padding, that's why it is showing. And the first thing that we're going to do is we are going to set up
Dagger Hilt, we are going to set up our project in which first we are going to put the dependency inside the मॉड्यूल लेवल ऐप। यहाँ पे हम क्या है डिपेंडेंसीज डालने वाले हैं, कुछ अपने प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होगी, सो वो हम पेस्ट करने वाले हैं। So these are the plugins actually you needed, you have to paste inside the plugins, right? And these all the plugins and the dependency I am going to paste here, these you can find in the source code, so you don't have to worry about that. And also you can find out on the internet, it is very easily available there. So these are the dependencies required. Okay, so these you can find again on the internet, and also you can find in the source code, so don't have to worry about again. And let's go into the project level Gradle. Here you have to paste the Dagger Hilt plugin, so let me paste it. So this is the Dagger Hilt plugin you have to put inside the project level Gradle. So and then what we have to do is you have to just let's check it last time everything is fine, and now sync it, and you have to make sure that sync must be successful here. So as you can see right here, our build is successful in 22 seconds. And let me go back, and the next thing that we're going to do, let me see what are the errors it is showing. This is the carved errors, so why it is showing okay unresolved reference carved. So this will go once you you know invalidate the cache. You can do it from here. Okay, clear the vcs log and restart it. Okay, now as you can see our error has gone, right? All things has set up completely, and now what we are going to do is in our android manifest file में हम क्या करने वाले हैं, we are going to give the permission here. permission हम देने वाले हैं किस चीज़ की, because हम देने वाले हैं permission इसे we are going to give the permission of the calling feature का हम permission देने वाले हैं, and also to use the storage, that's we are going to give, right? So let me give the permission here, uses feature जो हम यूज़ करेंगे, right? And uses feature that we needed, and let me give it Android. Okay, 1 minute. Android name. Why it is not suggesting? Now it is showing. So हमें क्या चाहिए, uses feature, this we needed, right? And after this Android name, and इसमें हमें चाहिए सबसे पहले हार्डवेयर टेलीफोनी, हमें चाहिए हार्डवेयर टेलीफोनी, that's we needed. And then we needed a one more thing that is required, false, and that's it. This happened. Now the next thing that we need here, the हमें permission चाहिए, एक और permission call permission चाहिए, right? तो that is uses permission, and we needed here the permission call phone. Okay, so both the permission we have given here. Now the next thing that we're going to do is we're going to set up our hilt को हम सेटअप करने वाले हैं, and hilt dependencies को how we can do that. यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें बेस एप्लीकेशन क्लास बनाने, बेस एप्लीकेशन class, and in this base application class we are going to extend with the application class. So this we are going to do, okay, and invocate the application. Now at the rate we are going to use the hilt android, right? This is the annotation we needed. And after this what we are going to do, and the next thing that is इन द मेन एक्टिविटी में हम एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देंगे कि एंट्री पॉइंट एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट एंड्रॉयड, यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट डिफाइन कर दिया एंड्रॉयड, लेट एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, राइट?
एंड इन द मैनिफेस्ट फाइल थर्ड थिंग हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा बेस एप्लीकेशन क्या है, राइट। ये हमारा बेस एप्लीकेशन हमने डिफाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट हम जाते हैं अपने फोल्डर पे अगेन, लाइक नाउ वी स्टार्ट राइटिंग द कोड। अभी सबसे पहला जो हमें कोड राइट करना है, दैट वी हैव टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज द स्ट्रक्चर, अ कंप्लीट स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज कोड हम रखेंगे। तो उससे पहले उसके लिए हम सबसे पहले क्या है, डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा, बैकएंड का कोड हमें लेके आना होगा, यानी बैकएंड का डेटा हमें लेके आना होगा, उसके लिए हमें कोड लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या है, एक फोल्डर बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू मेक इज़ द डेटा फोल्डर बनाते हैं। एंड आफ्टर that data folder we have to require one more folder inside it, that we require is a database folder, जिसमें हमारा सारा डेटा होगा, राइट। क्योंकि हम रूम का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो हमें रूम सेटअप भी करना होगा इसके अंदर। सो फर्स्ट हम एक रैंडम फाइल बना लेते हैं ऐसे ही, राइट, जिसका कोई यूज़ नहीं है। एंड इनसाइड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक पैकेज बनाएंगे, डेटा बेस, राइट। एंड हमने ये कर लिया। उसके बाद व्हाट वी रिक्वायर्ड इज़, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, वी हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट फाइल इनसाइड इट। हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट क्लास बनाते हैं एंड इनसाइड दैट इट वुड बी द डेटा क्लास, और वो क्या होगा, हमारा डेटा क्लास होगा। एंड यहाँ पे हम ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा करके हमें चाहिए ये, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर हम डेटा डिफाइन करेंगे, तो एंटिटी हमें चाहिए रूम की, राइट, रूम एंटिटी वी नीडेड एंड दैट्स वी गॉट। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे रूम के अंदर, राइट। टेबल है जो टेबल कॉन्टैक्ट टेबल चाहिए हमें सबसे पहले, जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट टेबल। एंड ये हमें मिल गया, राइट, डेटाबेस हमने रूम के अंदर बनाया। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक एनोटेशन चाहिए हमें प्राइमरी की, क्योंकि रूम के अंदर क्या रहता है, हमारा जो डेटाबेस रहता है उसमें प्राइमरी की का यूज़ करा जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी की का यूज़ करते हैं, राइट। ये हमने किया एंड इसको हम इंपोर्ट करेंगे प्राइमरी की को, राइट। एंड देन वी रिक्वायर सम वेरिएबल्स, ये हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। सो क्या क्या वेरिएबल, नेम सही है, राइट। एंड देन वी रिक्वायर अ फ़ोन नंबर, दैट आल्सो राइट। एंड ईमेल हमें चाहिए, दैट इज़ राइट। एंड यहाँ पे हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इज एक्टिव, राइट। एंड इज एक्टिव के बाद हमें यहाँ पे बूलियन, ओके, boolean type, and this we needed. Also we needed a few more things, that is where date of creation, हमने कब डेटा क्रिएट हुआ है तो उसका भी हम राइट करेंगे टेबल के अंदर, लॉन्ग, दैट वुड टाइप वुड बी लॉन्ग, ओके। डेट ऑफ क्रिएशन हो गया। एंड देन व्हाट वी नीडेड इज़, ओके, डेट ऑफ क्रिएशन तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक और कुछ, वी नीडेड इमेज, क्योंकि इमेज भी हमें चाहिए, राइट, प्रोफाइल के लिए, राइट। जिसमें हम क्या, देखो कॉन्टैक्ट में हम क्या सेव कराएंगे, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद उसके प्रोफाइल इमेज रहेगी, राइट। सो दैट्स वी नीडेड एंड दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर इज द image byte array, that type would be the byte array and is equals to null, ओके। ये हमें मिल गया एंड ये हम वेर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज डेटा वुड चेंज, डेटा हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा ना, हम सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, जो CRUD ऑपरेशन है वो इसमें परफॉर्म करेंगे, इसलिए वेर वेरिएबल हमें चाहिए, राइट। सो हमने सारा कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल्स को। एंड देन व्हाट वी नीडेड इज़, हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले, इज़ दैट वी आर गोइंग टू फर्स्ट मेक द कॉन्टैक्ट डेटाबेस। अभी हमने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर लिया, राइट, एंड कॉन्टैक्ट डेटाबेस भी हमें चाहिए। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटाबेस, कॉन्टैक्ट डेटाबेस, contact database, okay, everything is right।
and what we are going to do, and create the class here, and then inside it we need a database here. So first of all, what we are going to do, this class would be the abstract class रखते हैं हम इसको, एंड इसको हम डेटाबेस रूम डेटाबेस से एक्सटेंड करते हैं, रूम डेटाबेस एंड्रॉयड रूम। ओके, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, and then after this what we are going to do, we are going to define a function inside it that would also type of the abstract and get DAO, right? हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे DAO फंक्शन, and that would be okay। so हमें क्या है, इसका सबसे पहले जो हमारे जो इंटरफेस हमें क्रिएट करना होगा इसका, राइट? सो वो हमें पहले डिफाइन करेंगे। इसका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है जिसको हम सबसे पहले इसका क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मेक द डाओ इंटरफेस। हम क्या करने वाले हैं, डाओ इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं, एंड नाउ गो इनसाइड इट, और यहाँ पे हम क्या है, इसको क्या करेंगे, 1 मिनट फंक्शन बनाया एंड इसको एक्सटेंड कर लिया, राइट? अभी ये एरर नहीं दे रहा है, एंड यहाँ पर जो है ना रूम डेटाबेस हमने एक्सटेंड किया, एंड रूम डॉट डेटाबेस 1। यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे एनोटेशन लगाना है, डेटाबेस, राइट? ये एनोटेशन हमें चाहिए, एंड इनसाइड इट हम क्या करेंगे, एंटिटीज़ डिफाइन करेंगे। एंटिटीज़ इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट जो हमने डेटा क्लास बनाया है, कॉन्टैक्ट, राइट? एंड स्कोप दे देंगे इसको क्लास, एंड दैट्स वी हैव गिवन। इसको वर्जन देते हैं हम, वर्जन इज इक्वल्स टू 2, एंड उसके बाद हम देते हैं एक्सपोर्ट स्कीमा इक्वल से ट्रू। स्कीमा एक टेबल की तरह आप कह सकते हो, एक्सपोर्ट स्कीमा, राइट? वर्जन हमने ले लिया है 2, एंड दिस एक्सेल टेबल होती है उस तरह का एक्सपोर्ट स्कीमा रहता है, राइट? and this we have done right here। so now right now we don't need anything right here, and हम क्या करेंगे, डाओ में जाएंगे, ये हमने जो इंटरफेस बनाया, एंड इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एंड इसके अंदर हमारे सारे ऑपरेशंस रहेंगे। सो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या है, हमें बस यही डिफाइन करना होता है, और इसके पीछे का जो बैकएंड का काम है वो सारा डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? एसक्यूएल के ऊपर एक लेयर जो रहती है, राइट, उसे हम कहते हैं रूम डेटाबेस। सो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसका डेटा ऑब्जेक्ट यानी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने वाले हैं इसके अंदर। तो जो फंक्शंस हम लोग करेंगे, दैट फंक्शन वुड बी, फर्स्ट इज़ द अपसर्ट फंक्शन, जो कि इंसर्ट बोलते हैं, उसे हम अपसर्ट बोलते हैं अब, राइट? एंड अपसर्ट फंक्शन एनोटेशन लगाया हमने, एक सस्पेंड फंक्शन बनाया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एक्चुअली, राइट? एंड आपके इसके बाद क्या करना है, हमें सस्पेंड फंक्शन हमने ले लिया, राइट? एंड सस्पेंड फंक्शन में हमने क्या एक फंक्शन बनाना है, अपसर्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स इंसर्ट कॉन्टैक्ट, राइट? एंड इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टैक्ट फंक्शन टाइप का, and then what we have done, we have done this। after this what we are going to do is we are going to make another, right? here क्या आया, यहाँ पे as you can see delete contact, यहाँ पे ये भी फंक्शन, इसको एनोटेशन को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, एंड क्वेरी को हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे, इंपोर्ट क्वेरी, एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें इसको चेंज करना है, क्वेरी को। क्वेरी में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम हम रखेंगे कहाँ से, कॉन्टैक्ट डेटा टेबल से हम क्या सिलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया था, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग ऑर्डर में नेमिंग कर देंगे, राइट? सो नेम के अकॉर्डिंग क्या है,
डेटा फीड होने लगेगा, नेम के अकॉर्डिंग डेटा सेव हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या है इंपोर्ट करते हैं फ्लो को, एंड दैट वुड बी टाइप ऑफ कोरूटीन फ्लो। एंड ओके, गेट कॉन्टेक्ट सॉर्टेड बाय, यहाँ पे इसको सॉर्टेड नाम दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और सॉर्टेड कॉन्टेक्ट्स सॉर्टेड बाय, राइट, ये हो गया। एंड this we have done. After that what we are going to do is we are going to take here list, हमने ले लिया, and list type would be the contact, delete हो गया, and the next query that we are going to write is here contact table order by phone number, and यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेरी को लेने वाले हैं, एंड इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट्स टेबल के अंदर ऑर्डर बाई करेंगे, किसके थ्रू, डेट ऑफ क्रिएशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर बाई कर देंगे इसको। एंड देन यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट सॉर्ट बाय फ़ोन नंबर, शॉर्ट बाय हम कर देंगे डेट, ओके, शॉर्टेड बाय डेट। सो दिस वी हैव डन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू is everything we have done here। हमारे 4 functions थे, upsert, delete, query and 2 query functions थे, and that we have done right here context table order by user name के यहाँ पर हम क्या करना था, यूज़र नेम, आई थिंक हमने यहाँ पर कुछ गलती की है, यूज़र नेम, हमने शायद देखो कॉन्टेक्ट्स में जाकर क्या किया है, हमने नेम दिया है यहाँ पर, एंड वी एक्चुअली रिक्वायर हेयर द यूज़र नेम। बस इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो नहीं ज़्यादातर, आई थिंक। तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर हम सिंगल एनोटेशन में इसको लिख देंगे, राइट। तो सिंगल एनोटेशन में कैसे, ऐसे यूज़र नेम, राइट। तो यहाँ पे हम क्या नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन हियर, सो वी हैव completed our data access object, right। इसमें हमने सारे functions को complete कर लिया है, and now what we are going to do, हम अपना di folder create करते हैं, राइट। किसमें, डेटा फोल्डर के अंदर हम क्या है di folder create करते हैं, that would be this। so हम क्या करेंगे, di folder हमने बनाया, inside that what we are going to do, we are going to make a file, that type would be that name would be the Hilt module and type would be object। okay, so we have created this, and हम annotation लगाएंगे सबसे पहले, module annotation Dagger Hilt का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, and then what we are going to do after this, we are going to use another install in annotation here, and इसको हम क्या करेंगे, we are going to import it singleton,
right? We have imported, and inside the object Hilt module, what we are going to do is we are going to use the provides, and then we are going to create the function provide data base. This function we are going to do, and we are going to take the application, right, and we are going to extend it with the contact database, contact database, contact, let me see, contact database. That's we're going to extend with. And then what we are going to do inside it, we are going to use this one, right? room को हमने import किया, room dot database builder application dot base constant चाहिए हमें, application dot base context, and after this comma use किया हमने contact database class dot java, and name हमने दिया contact db, right? And then here what the name we have given, cannot find declaration, ये हमने दे दिया. And then we are going to use here the fallback to destructive migration, that's we are going to use dot build. Okay, so we have created this, and here we can do this like this, right? Now the next thing that we are going to do, we have completed this module, Hilt module we have completed. Now make the presentation folder हम बनाते हैं, and that we are going to build, right? अगेन ये क्लीन कोड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, एंड यहाँ पर डेटा फोल्डर हो गया. We are going to create the presentation folder. Where is that? Okay, presentation हो गया, right? And inside that presentation we are going to make first screen, not a screen, we are going to make first inside that contact. Okay, let me go inside it again and make the contact state. Okay, so we have created this file. So this type would be the data class, and inside it, okay, contact state. What we are going to do inside it, we are going to define some variable contacts list, and inside the list contact is equals to empty list, comma, well id mutable state, and inside it, that what we are going to do, we are going to give it a type int, and then is equals to mutable state. That's we have done, right? And we have given here the one as well, well name mutable state, and its type would be string, right? And is equals to mutable state of, inside it we have given the this, and we have to give here the comma as well.
and then another variable we have to make is equals to, and okay, एक काम करते हैं हम, what we are going to do is we are going to copy paste. We are going to do how many times we needed here. I think phone, email चाहिए and date of creation and image, so 4 we needed. So what we are going to do, so that's we have done, and at the place of the name we are going to give the phone, and then in the phone we are going to give here, we have to get the string that is right, and in the name of the name here we needed the email, right, and we have done email we have given, and then date of creation we needed, date of creation, and here we are going to give here the initial value is 0, right, 0 we have given now, and type here we have to change, that would be the long type, okay, and name again we have to change here the image, and inside the image initial value we are going to give here the null, so we have given here the null as well, and type we have to change here the byte array, okay, so this here we have to give the null safety, right, so we have given here everything. Now the next thing that we're going to do is we're going to make another folder, another file, that is the contact view model, जिसमें से हम क्या डेटा को फैच कराएंगे प्रेजेंटेशन फोल्डर में, मीन्स स्क्रीन्स पर हम लेकर के आएंगे वहाँ सर। तो कॉन्टैक्ट व्यू मॉडल हम बनाते हैं, कॉन्टैक्ट व्यू मॉडल दैट्स वी हैव मेड, एंड व्यू मॉडल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिफाइन इट फर्स्ट, इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को, राइट, ये हमारा हो गया, एंड इम्पोर्ट द इंजेक्ट, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन हो गया, एंड यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं हिल्ट व्यू मॉडल, हिल्ट व्यू मॉडल, राइट, इम्पोर्ट दिस हिल्ट व्यू मॉडल, देन कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें वेरिएबल बनाना है वेयर डेटा बेस, कॉन्टैक्ट डेटा बेस, right, this we have mailed and then we have to extend it with the view model lifecycle and invocate the constructor, and after this what we are going to do, private variable हमें लेना है एक, and where is sorted by name is equals to mutable state flow, यहाँ पे हम कर देंगे ये, एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, सो वी हैव इंपोर्टेड हियर, हमें एक और वेरिएबल चाहिए प्राइवेट, एंड वेयर कॉन्टैक्ट राइट, एंड इज इक्वल्स टू इज शॉर्ट बाय नेम डॉट फ्लैट मैप लेटेस्ट, फ्लैट मैप लेटेस्ट, यहाँ पे हमने लिखा, एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, राइट, हम फ्लैट मैप लेटेस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, एंड दैट्स वी हैव इंपोर्टेड, इनसाइड इट व्हाट वी नीडेड इज इफ नेम, हम ये लॉजिक लिखेंगे इफ, राइट, इनसाइड द डेटाबेस के अंदर अगर गेट डाउ डॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट सॉर्टेड बाय नेम अगर है तो ये दिखा देगा, राइट, शॉर्ट हो जाएंगे, अगर नहीं है एल्स, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, राइट, एल्स डेटाबेस डॉट गेट डाउ डॉट गेट कॉन्टैक्ट सॉर्टेड बाय डेट, ठीक है, और नेम के द्वारा शॉर्ट भी हो जाएगा और क्या डेट के द्वारा भी शॉर्ट, ये दोनों ही कंडीशन में शॉर्ट हो जाएगा, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम एक काम करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा, राइट, तो हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर ले लेते हैं, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, एंड दैट्स वी हैव टेकन, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, दैट्स वी हैव टेकन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स,
अभी वो भी लॉजिक ही ठीक था, वैसे लिख रहे थे राइट। एंड अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो हमने ले लिया, एंड आफ्टर दैट इफ़ का जो स्टेटमेंट फ्लैट मैप था उसमें डॉट लगा करके हम क्या करें, एक और स्टेट इन ले लेते हैं, स्टेट इन एंड व्यू मॉडल स्कोप शेयरिंग स्टार्टेड डॉट द वाइल सब्सक्राइब्ड एंड डॉट एम्पटी। ओके, ये सही सजेस्ट कर रहा है एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सजेशन ऑफ इट। एंड हम कोड को इसको इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले इसको भी इंपोर्ट करते हैं एंड देन ऑल्सो इंपोर्ट दिस। सो वी हैव इंपोर्टेड ऑल द थिंग्स एंड यहाँ पे हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ स्टेट इन लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले स्कोप चेक करना है कि हम वी आर इन द राइट स्कोप। ओके, हम व्यू मॉडल के स्कोप में हैं एंड देन वी हैव टू मेक हियर द स्टेट बनाना राइट। एंड स्टेट हम क्या करेंगे कि स्टेट बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे एक्चुअली। तो उसका स्टेट बना के हम उसको डिफाइन कर देंगे मिटेबल स्टेट फ्लो एंड कॉन्टेक्ट स्टेट हम दे देंगे इसको, जो हमने कॉन्टेक्ट स्टेट बनाई थी। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गिव हियर अनदर स्टेट ऑब्जर्वर। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हम यूआई के लिए कर रहे हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द कंबाइन state context is sorted by name, and inside it what we are going to do is we are going to take the state and that type state we needed the state here right, contact we need it. Okay, the state and we needed the contact, we needed is sorted by name, ये हो गया। एंड देन state dot copy is equals to contact is equal to contact. So this we have done. First what we have to do, combine को import करते हैं सबसे पहले। The which combine we needed, let me see, coroutines flow का combine we needed. Okay, and here हमने क्या कर दिया है, हमने contacts दे दिया है and we needed here the state flow contact, which this one we needed, I think so. Why it is still showing the error? Type of the contact is states. ओके, हमारा यहाँ पे कुछ हो रहा है गड़बड़। कॉन्टेक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट, contacts is equals to contacts, state contacts and contacts. So let me go and check here. हमने क्या किया है, यहाँ पे empty list दिया है and that type would be the contact state. लिस्ट हमारा empty type list है, contacts ये हमने सही दिया है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। then again go in the contact view model, हम कहाँ पे गड़बड़ कर, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आई थिंक सो। एंड sorted by name, contact state contact कॉमा is sorted। अभी समझ में आया, यहाँ पे अरेंजमेंट का प्रॉब्लम था, अरेंजमेंट ही गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से एज इट इज़ रखें। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करना है, and after that we are going to use one more extension here, dot
one more method that is state in ViewModel scope sharing started while subscribed 5000. yes, यही हमें चाहिए and it's suggesting right. After this what we are going to do is हमने ये सब चीज़ें कर ली and context कर लिया. अब now we are going to make a function that is fun change in sorting. change is sorting. Okay, inside the function what we are going to do, well contact हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे contact is equals to contact. inside it what we are going to do, ये contact हमारा है import the class contact. then what we are going to do here, हम देने वाले हैं ID name phone email is active date of creation, ये सारी चीज़ें देते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ID is equals to state dot value dot id dot value. ओके, ये हमें मिल गया. आफ्टर दैट वी नीडेड द नेम भी हमारा सही है. उसके बाद हमें फ़ोन नंबर मीन्स यहाँ पे हमें चाहिए फ़ोन. ओके, दैट्स इज इनफ. इट मस्ट बी इनफ. ओके, लेट मी गो बैक. फ़ोन नंबर कर रखा है यहाँ पे, हमें फ़ोन करना चाहिए अभी. एवरीथिंग इज़ फाइन. phone and here the email we have taken right and value is equals to is active is true. date of creation we have given here system dot current millisecond dot to. long का हमने लिया है तो हमें टाइप भी वही रखना पड़ेगा राइट. that's why it is very important. and current millisecond system dot current milliseconds dot to long. and after that image we have left. image हमें चाहिए state dot value dot image dot value. okay, so हमें ये भी मिल गया. then इस शॉर्टिंग में भी एक्चुअली सेव कॉन्टैक्ट में चाहिए था यार. ये फंक्शन में सेव कॉन्टैक्ट के अंदर चाहिए था, नॉट अ चेंज शॉर्टिंग के अंदर. तो हम इसे चेंज कर लेते हैं. ये हमारा जो फंक्शन है दैट वुड बी ऑफ द सेव कॉन्टैक्ट. एक्चुअली हमने फंक्शन सेव कॉन्टैक्ट बना दिया और नेम उसका दूसरा रख दिया था. दैट वाज द प्रॉब्लम. अभी हम क्या करने वाले हैं एंड वी आर इन द राइट फंक्शन. अभी एक और फंक्शन जो हम बनाने वाले हैं चेंज इज sorting function. inside that is sorted by name dot value is equals to, अगर sorted है तो ठीक है, नहीं है तो कर देगा short है right. so this is the logic. then what we are going to do, function we have created, save function हमने बना लिया, sorting का भी बना लिया. and now we are going to launch it right. so what we are going to do, we are going to launch it inside it and let's launch it. so launch हम कैसे करेंगे, inside the this we are going to use the view model get and dot upsert and इसको सबसे पहले import करते हैं. so we have launched it. launch हमने कर लिया. launch करने के बाद हम क्या करते हैं, state value को change करेंगे. हम state dot value और id e dot value is equals to 0 दिया हमने. and then इसके बाद हम क्या करेंगे, state value को फिर से change करेंगे. state value empty कर देंगे डॉट वैल्यू, क्योंकि जैसे ही ब्लैंक हो जाएगा ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली जैसे ही अपसर्ट हो जाएगा, अपसर्ट होने के बाद मीन्स मतलब कि जैसे ही डेटा सेव्ड हो जाएगा हमारा रूम डेटाबेस में,
सेव होने के बाद जो हमारी जो फील्ड्स रहेंगी वो एम्प्टी हो जाएंगी। फील्ड्स मतलब नेम की फील्ड एम्प्टी हो जाएगी, फ़ोन नंबर फील्ड एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद हमारा इमेज भी एम्प्टी हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें एम्प्टी भी तो करना होगा, राइट। यहाँ पे हमने इसे एम्प्टी कर दिया, सारी चीज़ों को हमें एम्प्टी करना होगा। एंड दस यू कैन सी राइट हेयर, इमेज को भी हमने एम्प्टी कर दिया, इमेज, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड उसके बाद नेम एंड आईडी हमने एम्प्टी कर दिया है। एंड right, and thus we have done. And after this what we are going to do is हम क्या एक और फंक्शन बनाते हैं, डिलीट फंक्शन, राइट। एंड हमें क्या करना होगा उसमें, हम करेंगे उसमें डिलीट। तो हमारा सेव कॉन्टैक्ट का हो गया, एक और फंक्शन बनाते हैं, इसमें करते हैं हम डिलीट, राइट, डिलीट कॉन्टैक्ट। एंड inside the delete contact this we have to remove and function directly लेंगे हम, इसका स्कोप रखेंगे। इसमें हम सबसे पहले well contact is equals to contact, inside the contact, 1 minute, inside the contact we needed here the id, second thing we needed here the, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, राइट। एंड दैट वी हैव टेकन वैल्यू 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 एंड इज एक्टिव इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ट्रू। डेट ऑफ क्रिएशन वी नीडेड इमेज, वी हैव लेफ्ट हियर, इमेज भी लेते हैं हम यहाँ पे, इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट दैट कॉल्ड स्टेट डॉट वैल्यू डॉट इमेज डॉट वैल्यू, ये हमें मिल गया। delete contact का फंक्शन है। एंड after in this delete contact function what we are going to, we are going to update the value, we model delete contact, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेट्स को हम फिर से एम्प्टी कर देंगे। स्टेट्स को हम एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। स्टेट डॉट वैल्यू डॉट आई डी 0 हो जाएगा, नेम 0 हो जाएगा, फ़ोन नंबर भी 0 एम्प्टी हो जाएगा, राइट, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। एंड डेट ऑफ क्रिएशन रह गया है, इसमें यहाँ पे डेट ऑफ क्रिएशन भी यूज़ कर लेते हैं। एंड दैट इज़ स्टेट डॉट वैल्यू डॉट डेट ऑफ क्रिएशन डॉट वैल्यू is equals to 0. Okay, so that's we have done, and we have completed this our view model हमने क्या है complete कर लिया है। now the next thing that we are going to do is utils folder बनाते हैं हम अपना। and utils folder हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंटेशन फोल्डर के अंदर हम बनाते हैं utils folder। इसमें हम utils जैसे कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी ना, हमें वो कॉन्टैक्ट किस फॉर्मेट में दिखाओगे आप स्क्रीन पे, कार्ड के फॉर्मेट में दिखाओगे, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कुछ यूटिल्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। एंड इनसाइड इट व्हाट वी नीडेड, फर्स्ट एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें, दैट वी आर गोइंग टू मेक। सो कस्टम टेक्स्ट फील्ड, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो यार ओके जस्ट लीव इट एज इट इज, कोई इशू नहीं है। एंड देन what we are going to do in the inside it, we needed the function here because now we are creating the UI part. So composable function लेंगे हम, as we take in the Jetpack Compose का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इन्वोकेट कर देंगे फंक्शन को। inside it what we are going to do, we are going to take variables and type would be the string। अब ये सारा पैरामीटर्स चाहिए एक्चुअली हमको, ठीक है। तो पैरामीटर inside it the function we are going to take value string comma on value change हमने लिया, एंड देन string हमने इसके अंदर डिफाइन किया, हमने इसको टाइप में चेंज करा, एंड देन यूनिट, एंड देन लेबल हम करने वाले हैं इसको string टाइप, एंड देन मॉडिफायर हम देने वाले हैं मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, एंड देन हम सिंगल लाइन लेने वाले हैं
single line is equals to boolean is equals true, and then we leading icon max line हम चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए leading icon, and leading icon में हमें image vector we needed. leading icon में हमको क्या चाहिए सबसे पहले image vector, right, and हमें max line नहीं चाहिए, and then after this what we needed is a visual transformation. विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक तो ये चाहिए, क्लियर इंपोर्ट करने के बाद हमें सबसे इसके बाद क्या चाहिए कीबोर्ड ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट, ये हमने कर लिया. एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू is inside it we are going to take the outline text field, okay, and inside that outline text field let me import it. Inside it what we are going to give is the value is equals to value comma on value change is equals to on value change comma label is equals to text label हम देने वाले हैं text, and इसमें हम label का यूज़ करेंगे, and then we need the colors is equals to text field default चाहिए हमें field default dot outline text field color सारा deprecated हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम यूज़ कर लेंगे. Okay, outline text field colors, and after that unfocused test color. okay, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं unfocused test color material theme dot color scheme dot on surface dot copy. inside अल्फा को हम कॉपी करेंगे, अल्फा is equals to content alpha dot disabled. content alpha हमने यूज़ कर अल्फा is equals to content alpha. let me see what is the problem. content alpha dot disabled that we have used, and then यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं what is showing the error. ओके, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले तो एनोटेशन लगा लेते हैं. ये हमने एनोटेशन लगा लिया. ओके, नाउ इट इज़ नॉट शोइंग द एरर. अब हमें यहाँ पे क्या है, ये हमने यूज़ कर लिया, ये कर्सर कलर फोकस टेक्स्ट कलर वी नीडेड, फोकस टेक्स्ट कलर वी नॉट. what are the things we needed inside it. focused border color require is primary color scheme, हमें क्या चाहिए प्राइमरी, राइट. at unfocused border color we needed is right, and हमें यहाँ पे कर्सर कलर चाहिए, फोकस्ड बॉर्डर कलर चाहिए, वो हमें मिल गया है. फोकस टेस्ट कलर फोकस्ड, राइट, ये भी ठीक है. अभी हमें क्या चाहिए सबसे पहले, अभी हमें क्या कर्सर कलर हमें चाहिए प्राइमरी, एंड उसके बाद हमको फोकस्ड लेबल्ड कलर हमें चाहिए, दैट शुड बी द मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट
प्राइमरी। ओके, ये हमें मिल गया। एंड प्लेस होल्डर कलर चाहिए। प्लेस होल्डर कलर फोकस्ड प्लेस होल्डर कलर is equals to what we needed, material theme dot color scheme dot on surface dot copy alpha is equals to content alpha dot medium, and that's we needed, so we have got it. After this, place color focus leading icon color चाहिए। First leading icon color that we needed, focused डिसेबल्ड लीडिंग आइकन कलर फोकस लीडिंग आइकन कलर हो गया, फोकस प्लेयर लेबल कलर भी हो गया हमारा। एंड देन व्हाट वी नीडेड द अदर थिंग इज डिसेबल्ड लीडिंग आइकन कलर, डिसेबल्ड लीडिंग आइकन कलर। चलो, एवरीथिंग वी हैव डन। डिसेबल्ड लीडिंग आइकन कलर ये भी हमारा हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज हियर हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। modifier is equals to, first let me make it big, modifier is equals to modifier and comma single line is equals to single line comma leading icon is equals to leading icon dot let and icon। हमने क्या करा इसके अंदर, हम क्या करने वाले हैं, आइकन इमेज वेक्टर कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल ये हमने यूज़ किया। इसको हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया इसको, आइकन why still showing the error, add the composable to add browsing lambda। This we have done। let me see what is happening here। okay, here is something, keyboard as well, keyboard options, icon image icon, here there is some problem, it is showing leading icon dot icon image vector, icon material 3 compose, that's we needed। and let me see here, more actions, import composable icon image vector, composable icon active boolean, now it is showing the error, it is still showing the error, why it is showing the error, okay, now it has gone, it's still showing the error, text label
text. Icon is fine. Where is the text? Let me check. Okay, these are the things that are showing the error, so which we can solve. That's not a big issue. And equals to label not in the composable function. And इसको मैं सॉल्व करूँगा, लेटर ऑन वी विल सॉल्व इट. इसको भी मैं सॉल्व करूँगा. ओके, बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके बाद क्या करना है? आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to first इमेज कंप्रेस हम बनाने वाले हैं यूटिल्स के अंदर. ओके, सो these are the things we will settle down and let create the image compress so image compress.kd file हमें चाहिए, and inside that image compress this function type 1, इसको हम क्या करते हैं? इन्वोकेट एंड @composable फंक्शन. हमें इसके कंपोजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज हम इमेज डेटा लेते हैं. इसमें इमेज डेटा टाइप वुड बी द बाइट array and return type would be the byte array. अब let me go inside it. Why again it is return it required, so return भी हम दे देंगे. Before that हम लोग एक काम करते हैं, इसमें bitmap चाहिए and then bitmap factory dot decode byte array चाहिए हमें. decode byte array and image data 0 image data dot size well output stream equals to byte output stream. Okay, and bitmap dot compress bitmap dot compress format डॉट. अब हम ये क्या कर रहे हैं? हम जब इमेज को सेव करेंगे ना रूट डेटाबेस में, तो उसको हम कंप्रेस करके सेव करेंगे. आउटपुट स्ट्रीम राइट, एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? रिटर्न देने वाले हैं. रिटर्न आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट array. Okay, so this we have done, and now the next thing that we are going to do is we are going to make the navigation folder जिसमें हम routes create करने वाले हैं. And so let's build it, and let me go inside the custom text field. Still it is showing the error. इसको भी, by the way, sometimes it shows the error, so don't take it so serious. And now come inside the where okay, in the presentation we needed the navigation folder first.
navigation on navigation. So we got the navigation here. Inside that we required a file routes. This a file we required here, and file would be the sealed class. सील्ड क्लास रखेंगे फाइल का नाम, एंड यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं वेयर, जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे, राउट एंड स्ट्रिंग, एंड ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे ऐड एडिट राउट्स, इसमें हम ऐड एडिट स्क्रीन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं होम क्रिएट करते हैं, राइट यहाँ पे हमें मिल गया, एंड देन ये हमारा क्लियर। नाउ अभी हमें क्या करना है, राउट्स हमारे बन गए। राउट्स क्रिएट करने के बाद वी हैव टू मेक द फोल्डर्स। अब हम क्या है स्क्रीन्स के फोल्डर बना लेते हैं, राइट, एंड हाउ वी कैन मेक दैट inside the presentation, and we need the screen folder. Inside it we require the first folder, name would be the add edit screen, and the second folder we required is the home screen. ये दो स्क्रीन्स होंगे हमारे, राइट, दैट वी नीडेड, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन में, क्योंकि ये हमारी UI क्रिएट करेंगे इससे हम composable, and that's how we have converted into the composable function and come inside the edit screen. Same we have to do with the add edit screen, and जिसमें we are calling the constructor, and then we need here to give the composable annotation. Composable annotation we have given. So after that यहाँ पे हमने composable function दे दिया, and then अभी हम navigation में जाएंगे again, then we have to create the NavGraph. मीन्स हम navigation को define करेंगे कि कहाँ से कौन सा screen navigate होगा. So for that we are going to create the NavGraph here, NavGraph, right, and created this function first file we have created. Inside it what we are going to do, हम एक function बनाते हैं NavGraph, graph, invocate करते हैं function को, and that function type annotation देते हैं composable function है, composable, and then inside it what we are going to do, first we are going to give the constructor here navhost controller comma view model हम ले लेते हैं, व्यू मॉडल हमारा हो गया कॉन्टैक्ट व्यू मॉडल, इसको हम इंपोर्ट करा देते हैं, हो गया, राइट। देन अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टेट बाय व्यू मॉडल स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, ओके, एंड देन navhost क्रिएट करते हैं, navhost, एंड nav कंट्रोलर डिफाइन करते हैं इसके अंदर हम navhost nav controller, we needed only the nav controller,
is equals to navhost controller and start destination. Start destination would be the routes home route dot routes हो गया and divide is showing there. Specify all remaining arguments भी define करेंगे इसके हम. Okay, so that would be the composable. सबसे पहले जो route होगा that route would be the composable. We have routes dot add edit dot route, and then inside it what we are going to define is add edit screen, and ये हमने import कर लिया add edit screen. इसको भी import करते हैं home screen. And ये जो states we have given here, first we are going to clear. State को हम क्या करने वाले हैं, add edit screen के inside हम इसको define ही कर देते हैं state को यहाँ पर. Then state is equals to view model dot state dot collect as state dot value. एंड यहाँ पर हम जो इसका पैरामीटर क्रिएट था, पैरामीटर स्टेट हमने क्रिएट किया, तो हमने पैरामीटर स्टेट क्रिएट कर लिया. उसके बाद हमको यहाँ पे देना है एक और चीज़, दैट वुड बी द ऑन इवेंट, राइट. एंड ऑन इवेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे view model dot save contact, right. And that's also we are going to define. Okay, and यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ पास करनी है. And navhost controller we haven't passed here, so that's also we have to pass. Array shit, navhost controller is equals to navhost controller. Okay, that's also we have to create, so we have created. होम स्क्रीन पे भी हमें यही सेम चीज़ें करनी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, पहले हम इसे स्ट्रक्चर कर लेते हैं कम्प्लीटली. एंड हम यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी, एंड होम स्क्रीन पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे काम करता हूँ. यहाँ पर navhost कंट्रोलर करता हूँ. navhost कंट्रोलर इज इक्वल्स टू navhost कंट्रोलर, इसमें स्टेट दे देते हैं हम, स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं व्यू. So now start building our home screen. So let's go in the home screen, and then inside it what we are going to do is we are going to take the scaffold and inside the scaffold what we require, top bar, right. And we needed a top bar here. So we have taken here. Now let me cannot find the top bar, so let me check it why it is giving the error. Again let me take the scaffold, then inside the scaffold what we needed is the top bar
Okay, why it is not showing the top bar? Hmm, hmm, hmm. Okay, and top app bar. So let me check it again. View model, Navigation controller, everything is fine. Contact view model, we are in the right scope. And then okay, composable function we have taken, cannot it is giving the error without any clue. So let's build it, not a big issue. We are continue building it. Title is equals to, right, we are going to get the text here, text. Okay, text we are going to take the contact keeper. Then outside of that text we are going to take the another thing, cannot find a parameter with this name. Which scaffold we have taken? Let me see. Okay, now I understood. Which is import more actions function, create the class, import the scaffold. We needed the material 3 scaffold. Now it is fine. That's why it was giving the error. Now here we have to give the inner padding. Okay, now everything is fine. And now let me see top app bar. Inside the top app bar we need here actions, and is equals to actions. We needed inside the actions an icon, and that icon type would be the image vector type icon we needed here. So we have taken that, and image vector. After taking the image vector here, we are going to icons. We are going to take the icons dot auto mirrored. Okay, and then dot filled. We have taken dot short, we have taken now. So we have done everything. Outside of it, what we are going to do is we are going to do the content description is equals to short, and then after it we are going to the modifier is equals to modifier modifier dot clickable we needed here. So we have taken the clickable. Then inside the modifier view model we needed dot change shorting. Okay, so that's we have done. Let me organize the code. Control Alt L. So we have organized the code completely, and as you can see top app bar we have here the error. So we need the experimental material 3 API. This is actually the API which is the experimental, that's why it needed the annotation here. So this we have done. Now the next thing that we're going to do is we're going to take the floating action var, right? And this we have done, right? This we have to go inside the right scope. So that scope would be this, and here we needed the floating action button, and inside it we needed another floating action button, and on click of that what would happen, that's we will see, and on the click of that we will navigate it to the navigate routes dot edit screen पे हम navigate कर देंगे routes dot add edit. So that's we've done, and as you can see navigate
Okay, a create action function navigation controller dot navigate more actions. Let me see what is the problem here. Routes dot okay dot route. So now it is fine. And then after this, the on click, what is required is inside it we are going to give the icon. So icon image vector. Okay, image vector is equals to icons dot default dot add icon we needed. Okay, so add icon we needed, so we have given the add icon. Now after this we need the content description is equals to add. Everything is fine. Okay, so as you can see we have given here everything, and we have to come inside of it, and we have to come inside the column. Okay, inside it what we needed, that we are going to decide. And what we needed here, we needed the column, and we have taken the column, and then inside the column we needed the modifier is equals to modifier dot fill max size dot padding, and dot padding इसमें हम दे देंगे inner padding. And then what is needed inside the column, that is lazy column, and inside the lazy column we are going to give it few things, like we are going to give it the items, right? And item state dot contexts, and inside this, okay, let me import it first. Import contact and well, we have given width map is equals to contact dot image let, we needed let, and then bitmap factory, and then decode byte array. Then inside it we needed the 8 comma 0 comma 8 dot size. Okay, so that's we have done. After this what we needed is as image width map, we needed this, and then contact card we needed. Okay, so contact card we will create, so don't worry about that. Okay, we needed inside that contact card a few things, so we have to come down outside of this scope. We have to come down outside of the scope of this, and then here we are going to create the contact card fun, and function बनाया हमने contact card. Then here we have used composable, and inside that we needed few things, like we needed a name, string comma phone
string comma email string comma we need the image byte array okay, and then byte array image, right, image byte bitmap, okay, and then date of creation, and date of creation here we needed the long type, and then id we needed here the int view model, and view model here we needed the contact view model, and state we need the contact state type, and then nav host controller this we needed this. So as we have got it, now inside it what we are going to define is we are going to give here the few things like a view model is equals to view model comma, okay, state is equals to state comma name is equals to contact dot name, and here we needed the phone contact dot phone, and then we needed the email contact dot email, and then we needed the image contact dot image, and then we needed the image byte array is equals to contact dot image, okay. So we have got it, and id we needed is equals to contact dot id, and then what is date of creation contact dot date of creation, and then nav host controller nav host controller. Everything is fine. One error it is showing. Change the parameter image type function convert to the byte array. Okay, image we have taken here, okay, bitmap we needed here the image is equals to bitmap, that's fine. Now inside it we are going to create the contact card, and we needed here the first the val context is equals to local context dot current card we needed on click state dot id dot value is equals to id, and then state dot name dot value is equals to name. 1 minute ये हमारा हो गया. So actually we don't need the commas here, we are defining here the state, that's why it all showing the error. So we have to just check it again. Date of the creation we also needed here, so there is state dot date of creation dot value is equals to date of creation. So these all the district we have defined. Let me check everything is fine, everything phone is equals to phone,
and email dot value ओके ठीक है, image dot value image byte array, date of creation भी हमने दे रखा है and that's fine and ये भी हमने कर दिया है. So that's all the thing is right. And now we are going to give the modifier is equals to modifier dot fill max width and इसके आउटसाइड हम आएंगे तो हम पैडिंग दे देते हैं इसको. फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव द पैडिंग ऑफ अराउंड 8.dp and we have to import the dp, and then after importing it we needed clip, and clip is rounded corner shape and import it first, and we needed the 12 dp of the clip and 12 dp का हमने clip देने के बाद, so we have done this all of the things, and then a row we needed is vertical alignment row. Inside the row, why it is not imported? This we needed, so we imported. Vertical alignment is equals to alignment center vertically. Modifier we are going to give here the modifier dot fill max width, and we are going to give here the padding as well. Padding हम देने वाले हैं 12 dp, and then inside the row what we are going to give, we are going to define if image अगर null नहीं होता है, not null, then what we are going to do, we are going to create the image, and image we are going to take, and inside it bitmap is equals to image comma content description is equals to contact image, and then we need a content scale is equals to contact scale contact scale we needed contact image contact scale content scale we needed here the content scale dot crop, and we needed here the modifier clip modifier dot size we needed here size, and we have given here the size 64 dp, and that's fine. After this clip it in the circle shape okay, so that's you've done, and inside it is inside the image, and come outside of it we are going to take the else function. Inside the else function we are going to show the icon and image vector, same thing that we are going to take here the is we are going to take these all of the things, control C control V. Here we are going to take first image vector is equals to icons dot default dot person, and यहाँ पर हमें content description हमने दे दिया contact image, the same thing we needed here as well, and one thing content here we are content skill dot crop, this we have to remove, right. सर्कल शेप हमने ले लिया. आफ्टर दैट
बैकग्राउंड हम दे देते हैं इसका बैकग्राउंड मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन प्राइमरी container. So that's we have taken, and यहाँ पे हम padding भी दे देते हैं इसको padding 16.dp and that's we have given. Now tint भी दे देते हैं यहाँ पे tint is equals to material theme dot color scheme dot on primary. Right, so we have done this as well, and हमने ये कर लिया. After this what we are going to do, come out of the else scope. स्पेसर देने के बाद हम क्या करने वाले हैं, स्पेसर देते हैं इसको हम, एंड मॉडिफायर देते हैं स्पेसर के अंदर मॉडिफायर, एंड विड्थ हम रखेंगे इसके विड्थ 12 dp का हम विड्थ रखेंगे. This we have taken, and we are going to take the column, and inside the column we are going to take the modifier is equals to modifier dot weight 1f. Inside it what we are going to do, text we are going to take, and inside the text we are going to give it a text. Text हम देने वाले हैं text is equals to name comma font weight is equals to font weight dot bold and comma font size 20.sp, and then we need the color हमें चाहिए not a surface, we need a on primary container, that's we need it. okay, उसके बाद स्पेसर हमें चाहिए, and at the spacer we require control C control V करता हूँ, and we require the 4 dp of the spacer, right, and the same thing we required again, so take it that as well. हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, text चाहिए, so let's take the text control C control V, ये 1 minute, control alt L, हमने ये करा अपना right, and unresolved text 1 minute, and these are the same thing, that's why it is showing error. हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं phone, and here what we have to do, now I've understood. okay, this we have done. अब यहाँ पे हमने फ़ोन दे दिया इसको, साइज 16 dp रखेंगे हम, इसका साइज 20 sp है, 16 dp है, एंड देन कलर हमारा प्राइमरी कंटेनर ही रहेगा, एंड दैट्स इट. एंड ये हम रिमूव कर देंगे, वी डोंट नीड इट राइट नाउ. हमें कंट्रोल C करके यहाँ से अगेन हम कंट्रोल V करते हैं, एंड देन हियर वी नीडेड वन मोर टेक्स्ट दैट विल बी द ईमेल, एंड इसमें हमें एक स्पेसर का रिक्वायरमेंट होगा, कंट्रोल C, and before it we are going to give the one spacer,
tell. Okay, so we have done this. Now 12 SP का हमें ये चाहिए, राइट? ये हमें कितने का चाहिए? 12 SP एंड एवरीथिंग। 3 टैक्स चाहिए था, 1 2 3। वी नेम हमारा, फ़ोन और ईमेल ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट ले लिया, राइट? ये हम वी आर इनसाइड द, आई थिंक वी आर इनसाइड द कॉलम के इनसाइड है हम। एंड देन हमें क्या करना है? The next thing that we are going to do is we are going to take the column. स्पेसर देते हैं सबसे पहले। स्पेसर modifier is equals to modifier dot width, and width हम लेने वाले हैं 12.dp, and thus we have taken, and outside of that we are going to give the column. Inside the column we are going to take some few things, like we need the vertical arrangement is equals to arrangement dot center, and then horizontal alignment is equals to alignment dot center alignment dot center horizontally. Thus we need it, so we have taken. Now inside the column, right, icon button we needed, so thus we are going to take icon button, and icon button, inside the icon button on click we needed. Inside the on click we needed state dot id dot value is equals to id, not this one, id, and that's how it will work. Sorry for the disturbance, right? Here what we needed, the next thing is the state dot name dot value is equals to name, and then we needed the state dot phone dot value is equals to phone, and then we needed the state dot email dot value is equals to email, and then we need a state dot date of creation dot value is equals to date of creation, and then state dot not a state dot, right now we need the view model dot delete contact, right? This we have got, and view model dot so we have got the id, name, phone, email or date of creation. And then the next thing that we are going to do is inside the, this is the image button, inside it what we are going to do is icon, we are going to take the image vector is equals to icons dot default dot delete. Thus we have taken now content description is equals to delete tint is equals to material theme dot color scheme dot error, right? So this we have taken after this, and we are going to take another icon button and inside that icon button we are going to decide on the click of that what happens, and we have to create first
the variable is equals to intent. Okay, intent. Okay, and inside it intent dot action call and then intent dot data is equals to dot parse, and inside the parse tell. Okay, this we have taken phone, and that's what we are doing is we have given here the parse, and the context we are going to decide is the context dot start activity intent. Okay, so we have taken this as well, and inside it what we're going to do is we're going to do the icon image person icon. We are going to give here the call, and here the call int material primary thing. Okay, so we have given the icon here, so our home screen has completed right now. So as you can see, now we are going to create our edit screen. So let's go inside the edit screen, let's create it. So on the click of the edit button, this screen will active. So let's create it. So first thing that we needed inside it is we need the state that we have. On event is a unit that we have, neighbors controller also we have. So what is we are going to do is a well, and inside the well means well we are creating the actually the variable. So we are going to take the context as a variable is equals to, and we needed the local context here, local context dot current, that's we needed. कंट्रोल ऑल टेल कर लेते हैं, इससे हमारा कोड फॉर्मेट हो जाएगा. एंड अनदर वेरिएबल दैट वी नीडेड इज द पिक मीडिया, जिससे हम क्या इमेज मीडिया को पिक करेंगे, राइट. इमेज पिक मीडिया इज इक्वल्स टू रिमेंबर राइट, रिमेंबर launcher activity result, and then contract हमने लिया, and contract we are going to take contract is equals to activity result contract we needed here, and dot pick visual media activity result contract we have taken here, result contracts we needed, this one we needed, and pick visual media we needed here. And then we have invoked the constructor. Inside it what we are going to do, we are going to take the URI, and that's URI. Okay, and after it we needed the here the logic if if URI not null, अगर URI null नहीं होता है then what happens, right. अगर URI null नहीं होता है then we're creating the variable here input stream input stream question mark is equals to URI. हम let क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, एंड देन कंटेंट रिजॉल्वर का यूज करके ओपन इनपुट स्ट्रीम डॉट डेट, ये हमने कर दिया इसे सेट, हमने क्या कर दिया इमेज सेट कर दिया यहाँ पे, राइट. एंड देन कमिंग out of the thing that's we require another variable here, well byte
is equals to, before that what I'm going to do here, I'm going to just make it spaceful, and then here what we are going to do is not null, byte is equals to input stream. We are going to get input stream dot, and that would be the concept dot the read and read bytes and read bytes that we have taken. So what we have to import it first. Let me see. Let we have taken well byte is read bytes. Okay. Let me see. Input stream dot input stream we have taken now read bytes. That's we need it. Am I right? Read bytes. And then if हम एक और condition लेते हैं, byte is not is equals to null, right? अगर null नहीं होता है, then what will happen? We are going to well compress कर देंगे हम, compressed image is equals to compress image. Okay, let me see. Compress image compress था, I think. Compress image compress and byte we have given. Let me see which image compress it is. This is the image compress. Okay, so we have taken this as well. Now coming back, edit screen पे हम आते हैं, and as you can see right here, हमारा compress image ले लिया है, and if हम क्या करते हैं, compress image is equals to compress image byte है, image compress हमें यहाँ पर लेना होगा, compressed image यहाँ पर हमें क्या रखना, compress image, not a compress image, we needed here the compress image dot size is greater than the 1 MB divided by multiply by 1024, राइट. तो हम इस स्टेट में क्या करेंगे, इस केस में हम टोस्ट शो करा देंगे इसे. टोस्ट भी नीडेड हेयर द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे हम शो करा देंगे कि इमेज इज टू लार्ज, इमेज साइज इज टू लार्ज, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए. इमेज का हमने दे दिया साइज, एंड टू लार्ज, image size is too large. Please choose a smaller image. अगर साइज अगर इससे बड़ा होगा तो हम उनसे बोल देंगे कि इमेज साइज बड़ा है, स्मॉलर साइज को चूज करें. एंड एल्स अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हम उसे सेव करा देंगे इमेज को अपने डेटाबेस में, compressed image. Okay, so that we have done. And now image compress scaffold लेते हैं हम. Next we are taking is the scaffold outside of it. else के बाद हम क्या scaffold लेते हैं, हमारा ये जो pick media था, pick media का काम finish, and then we are going to take this scaffold. Inside this scaffold, here we are going to give the inner padding, right, and
स्कैफोल्ड के अंदर हम रखते हैं टॉप बार, and inside the top bar what we're going to do, we are going to take the top bar, and inside that top bar what we're going to do, title we're going to take, and title ke inside we are going to take the text. That text would be this one, and text we have taken here, we are going to give the text is equals to add and edit contact. Okay, this we have taken. Now outside of it what we are going to do, navigation icon is equals to icon image vector is equals to icons dot default dot arrow back iOS news comma content description is equals to back. Okay, so that's we have done. And then why it is showing the error? Okay, experimental API कॉल करना था हमें, राइट? सो ये हमने कर दिया, एंड देन पैडिंग वैल्यूज हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे। इन पैडिंग के अंदर यहाँ पे हम कॉलम को कॉल करेंगे सबसे पहले, कॉलम, राइट? एंड इनसाइड द कॉलम फर्स्ट वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द कॉलम. Modifier is equals to we needed here modifier dot padding, एंड इसमें हम क्या करने वाले, पैडिंग वैल्यूज इज इक्वल्स टू पैडिंग वैल्यूज देने वाले हैं. मॉडिफायर इज इक्वल्स टू पैडिंग में हम क्या करने वाले, इनर पैडिंग दे देते हैं डायरेक्टली, राइट? इनर पैडिंग. एंड फिल मैक्स साइज करते हैं इसको, फिल मैक्स साइज, and fill max size. Outside of that padding we are going to give here, that is the 16.dp padding we have to import right here. Okay, we have imported the padding. Outside of that what we are going to do, horizontal alignment is equals to alignment center horizontally, and then inside of that well image is equals to state dot image dot value dot let we are going to take, right? And bitmap factory that we needed, right? Bitmap factory. Okay, it's not calling the bitmap factory, bitmap factory that's we needed. And decode by array, and 8 comma 0. Let me show it first. Here we needed the 0, and then it dot size we needed here, and then we have given everything is sorted, right? And as we can say, as image bitmap, and outside of that what we have to do, box, and then modifier is equals to modifier dot size, and we are going to modify dot size that we have taken right here, and we have modified it, right? Box we needed of 150 dp, and the content alignment we are going to give here the alignment dot bottom end, right? And then
inside of the box, what we are going to do is we are going to define the image, and if कंडीशन रखते हैं हम, अगर if image अगर हमारा null हुआ, then what would happen? Let me see it first. And okay, image is equals to null, then what would happen? Inside that is image image painter. Inside that we needed the bit map image comma content description is equals to content image. Content scale is equals to content scale dot grep modifier is equals to modifier dot size we needed of around 140 dot dp, and here we needed one more thing, is that we need the clip, and clip of the size would be the circle shape, and then we need the background here. Background will be the color dot gray, so that's we need it. All right, and after that, that's we needed here the icon, and icons here image vector is equals to icons dot default dot person. Okay, this way icon we needed here. Content description we're gonna take content description is equals to contact image we need, right? That's the contact image, so we are gonna give it the contact image as a string, defining the description, and then we need here the modifier is equals to modifier dot size and 140 dot dp size we needed, and then okay डॉट क्लिप करते हैं हम इसको, अभी क्लिप करेंगे तो कितना होगा, सर्कल शेप में क्लिप कर देते हैं हम इसको, and then another thing that we require is we needed the background, and background we needed of around color dot gray. Okay, and then padding we needed here, padding is around 24 dot dp. Okay, and then we're gonna give here the tint material theme dot color scheme dot on surface. Okay, so we have given here the tint as well, and then what we are going to do is coming out of the scope of else, and we are going to take an icon button, so that's we have taken, and on click of that icon, not a on click we needed on on click. Okay, on click we needed here the pick media dot launch, and inside that we needed the what we needed at the pick visual media request, pick visual media request result contracts activity result. Okay, we have taken here, and inside here we required the activity results contracts dot pick visual media dot image only, so that's we have taken. Now activity में को check करना है, imports I have to check it correctly, image contract dp contact
image, pick visual acuity result. Okay, everything is fine. Okay, now coming back to our point where we were, here we are. So pick visual media request that we have taken, and image only we have taken here, image lega only, and then okay, what we are going to do, we are going to give it here the comma and modifier is equals to modifier dot size, and then we are going to take the 30 or dp size. Okay, and then clip we are going to take the circle shape, and then here we are going to take the background and background the material theme dot color scheme dot primary. Okay, so that's we have taken. Now, so we have taken these all of the things. Now the thing is left here is inside it. प्राइमरी के बाद हमें क्या करना है, इस स्कोप के अंदर आना, एंड वी आर गोइंग टू टेक द आइकन हियर, आइकन हम लेने वाले हैं, एंड हियर आई एम गोना गिव द इमेज वेक्टर इज इक्वल्स टू आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट, हम क्या करने वाले हैं, ऐड का यूज करने वाले हैं, ऐड वी हैव टेकन. नाउ contact description दे देते हैं, content description would be the add, and here we are going to give the tint color white. वो अरे यार, ओके नाउ इट्स फाइन. अरे यार यहाँ पे देखो बार बार ना हमारा वही चीज़ आ रही थी, when it becomes so irritating. So finally we have done this, and after this what we're going to give, we are going to give the spacer modifier is equals to modifier dot height हम लेने वाले हैं 16 डॉट dp की हाइट हमने ली, and then we are going to give here the, let me check the scope, and the scope would is the column is the scope, right? And then spacer के बाद हम क्या करना, custom text field we are going to take. Inside that value we are going to take is the state dot name dot value, and here we are going to take the on value change is equals to state dot name dot value is equals to 8. Okay, so that's we have taken. Label we required here, name, and then keyboard options we required here, that is the keyboard options we required here, and then keyboard type is equals to keyboard type dot text. Then outside of the leading icon we are going to give icon is equals to icons dot default dot person. Okay, that's we have taken. Then modifier दे देते हैं हम इसको, modifier dot fill max size, fill max width चाहिए था हमें यहाँ पे, and thus we have taken. Now we are going to copy this, right, control C, and then we are going to paste right next to it
write down to it, right, not next. And so we have given here, but we have to change a little name here. Phone we have to change, and here we have to give the label phone, phone number, right? That's the things we have to. And here we have to change the call. Okay, that's we have to change. And now again we are going to paste here, that is height. We have taken here the 16 dp, we have to give here the 8 dp of height on the both of the places, right here and as well here. So let me paste it, and here we have to give the height of 8 dp, and then here we have to change the name to the email. Change name to the email. Okay, here also we have to change the name as a phone. Okay, and here we have to change the email. Okay, so here also change the email. So that's we've done. email we have changed now, and text का जगह यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, email कर देते हैं. and here also we are gonna text के जगह हम क्या करेंगे, phone करेंगे. So these are the changes are required that we have changed. And now come to the next thing, phone call. Okay. Next thing is, next we required is name phone हमारा हो गया, email हमारा हो गया. After this we required a spacer after the custom button. हमें क्या स्पेसर रिक्वायर्ड है, हम एक काम करते हैं, स्पेसर हमें रिक्वायर्ड है तो हम ये वाला स्पेसर ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V. यहाँ पे हम बस वैल्यू चेंज करेंगे 16 dp का, then all set, and then after that button we are gonna take, and on click we need it, right. And after this we need the on event here. on event पे हम क्या करेंगे, invoke कर देंगे इसे, and nav host 1 minute nav host controller is equals dot navigate कर देते हैं, navigate up, that's we need it, navigate up. And here the on click के बाद हमें modifier लगाना है. यहाँ पे modifier is equals to modifier dot fill max width, and that's fine. and text हमें चाहिए inside the button, text हमें चाहिए, text is equals to save, contact save का हम text चाहिए. and here we require the font size is equals to 18.sp, right. So that's we required, and our edit screen has completed. So after completing this add edit screen, right, and ये हमने complete कर लिया है, and then what we're going to do, we're going to run our application and look how much it has built, right. So let's see that. So our application has launched, so it is not coming here. So let me see what is the problem. Right here, as you can see, I'm going to connect it to the device, and right here it's look like this, right, blank है completely. Because why it is showing blank, I'm going to tell you here. in the main activity, यहाँ पे हमने क्या है, कुछ कॉल नहीं किया, राइट. मेन एक्टिविटी में जाके हमें सबसे पहले कॉल करना है. विच स्क्रीन वी हैव टू कॉल, वी हैव टू कॉल फर्स्ट द NavGraph. NavGraph हमें क्या है, कॉल करना है. सो लेट्स कॉल इट हियर.
एंड उससे पहले हमें क्या कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे NavGraph के लिए। तो पहले हम NavGraph को कॉल करते हैं, NavGraph ओके, ये हमें कॉल कर दिया। एंड इसमें कुछ वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए हम पैरामीटर्स बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। एंड दैट्स वी आर गोना बिल्ड, सो लेट्स बिल्ड दैट पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए? सो फर्स्ट तो हमें वेरिएबल चाहिए, वेल view model is equals to contact view model, not a contact view model. We need here the hilt view model, and then inside it we have to give the type of it, right? Contact, 1 minute, contact view model, ये हमें import करना होगा। So we have imported it and now it is fine why it is showing the at the composable on the on create। So हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटा करके सेट कंटेंट के बाद हमें पेस्ट करना, राइट? नाउ इट इज़ फाइन, अब एरर नहीं दिखा रहा, राइट? एंड देन हमें क्या करना है, लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज़ ऑन और नॉट। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग इज़ ऑन। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें एक और देना है, वेल हमें nav host देना है, nav host कंट्रोलर, रिमेंबर nav host कंट्रोलर। एंड देन इसको भी हमें क्या है, इम्पोर्ट करना है। एंड हमें यहाँ पे ये वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं। सो लेट्स डिफाइन दीज वेरिएबल्स हियर। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले nav host कंट्रोलर इज इक्वल्स टू nav host कंट्रोलर कर देंगे। एंड देन वी हैव टू गिव द व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू व्यू model। okay, so we have set all the things here and we have given the parameters, and now we are going to run this application and let's see, here the main screen should come। so as you can see our main app, our screen has called here and will look like this, क्योंकि हमने कोई contact save नहीं करा है। so let's save some contacts here। so as I would click over the add पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या contact अपना सेव कर सकते हैं। एंड तो क्लिक करते हैं यहाँ पर, एंड एज आई वुड क्लिक एट द ऐड आइकन, तो हमने आइकन कोई भी क्लिक, राइट? यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड करता हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू गिव इट अ नेम शिवम, राइट? एक कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, राइट? ये हमने नंबर ले लिया। एंड ईमेल दे देते हैं हम यहाँ पे shivam@gmail.com, राइट? ये हमने ईमेल दिया, कोई रैंडम ईमेल है, एंड सेव कर दिया। तो ये देखो हमारा क्या है, ईमेल सेव हो चुका है। मीन्स ईमेल क्या है, हमारा पूरा कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है। इफ़ आई क्लिक ऑन दैट, अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो इसे अपडेट भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे जा करके इसको चेंज करता हूँ, शिवम की जाए मैं रखता हूँ विजय, नेम चेंज कर देता हूँ। एंड इफ़ आई वुड सेव इट, और जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे विजय नेम सेव हो गया। तो कोई भी चीज़ आपको पर्टिकुलर फील्ड चेंज करना है तो वो भी हमारा चेंज हो सकता है। एंड दैट्स हाउ आवर एप्लीकेशन विल वर्क। हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क करेगा और ये सारे हमारे फीचर्स होंगे इसके अंदर। एंड आपको अगर डिलीट करना है इस कॉन्टैक्ट को, आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट आइटन पर क्लिक करके। सो दैट्स हाउ वी कैन डिलीट ऑल द कॉन्टैक्ट्स इन आवर contact keeper app। and if I want to again save, and if I want to keep one more contact into it, then what we can do, we can click over the add button and then again save here the another contact, like if I want to give it a name like Rajesh, if I want to give it a name John दे देता हूँ। okay, I'm giving here the name John, and then number I'm going to give it here the random number, and email John, okay, john@gmail.com, this is the email I have given, and now save it। so we have saved it। and one thing we forget here to give it a profile, so profile भी हम update कर देते हैं यहाँ पे। suppose like I just want to give it a this profile, so हमने ये profile दे दिया है and let's save it। so ये हो गया हमारा save। so that's how you can do everything। CRUD operation तो पूरा perform कर सकते हो in the room database using this। so हमारा application has completed here, and one thing has left, that is our splash screen and icon को हमें change करना है। so that's we are going to do। so let's do it। so how we can do this all of the things? first we are going to add the splash screen। so before that we have to go inside the main activity। हम main activity में जाते हैं and then
here what we have to do, okay, few changes you have to do. Last time I didn't tell you कि DAO में जाकर के आपको ये यहाँ पर है ना DAO @DAO ये आपको जरूर लगाना वरना एरर आएगा, राइट। एंड ये हमने नहीं लगाया था। एंड ऑल्सो वी वर गेटिंग द एरर इन द, हम यहाँ पर भी कहीं एरर हमें मिल रहा था कस्टम टेक्स्ट फील्ड में। सो एरर हमको क्यों मिल रहा था, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे है ना सिंगल लाइन जो है आपको सही सिलेक्ट करना है, राइट। सिंगल लाइन इजकल्स टू सिंगल लाइन, हमने क्या यहाँ पे एक तो स्पेलिंग गलत दे रखा था, सिंगल लाइन यहाँ पे हमने ये कर रखा था, राइट। और इसकी वजह से हमें क्या है एरर शो हो रहा था। देखो यहाँ पे एरर आ गया, राइट। तो हमें क्या है हमें स्पेलिंग यानी टाइपोग्राफी भी सही रखना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट गिव इट हेयर आफ्टर द मॉडिफायर सिंगल लाइन इजकल्स टू सिंगल लाइन। तो यहाँ पे हमारे कस्टम टेक्स्ट फील्ड का जो एरर है वो भी चला जाएगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड इन द मेन स्क्रीन, and what we are going to do here is we are going to give it a well, okay। यहाँ पे हम क्या है सबसे पहले तो composable function create करते हैं, and that we are going to create splash screen build करते हैं। so fun and main screen, where is main screen, and thus we have created, okay। and हम लगाते हैं यहाँ पे @composable annotation, so we have to give it here composable annotation। inside that composable function we have to define some few variables like view model is equals to Hilt view model we have to take, and then inside the Hilt view model we have to take the contact view model, and after that we have to take the variable and state by view model collect as a state, thus we have taken। and as we have taken this, we have to just import collect as a state, and everything is set. Now again it is showing the error, so for that we have to import the set dot get value. So we have imported, and well, we have taken nav host controller is equals to remember nav host controller, that's we have taken, okay। by the way, we don't need this variable, I think, that's why I'm going to remove it, and everything is fine। now come to the point here, what we have to do, we have to make the variable for the show splash screen is equals to remember and here it is like an immutable state of and true, thus we have given the true, and so we have got it, and we have to just import this remember function, so we have imported। and now after this what we are going to do, we are going to take the launch effect, and inside that launch effect we are going to give the unit function unit, right। so it will launch one time and will not return anything inside this launch function। what we are going to do, we are going to take the handler, and we are going to take the handler that we have taken, and then inside that we are going to take the looper, looper dot get main looper, and after that we needed the post delay हम कर देंगे screen को, that we are going to give the post delay of around show splash dot value, right, is equals true, and then we are going to give here the 3000 second as a delay, right। so milliseconds का हमने delay दे दिया, यानी 3 seconds it will delay। and after this what we are going to do is outside of this function launch effect, we are going to write our logic, right, show splash dot value, that's we have taken, and after this we are going to show the splash screen here, splash screen, right, this we are going to show। so this we are going to build because we don't have the splash screen, so we will build it, and else we are going to write here, okay। and that we are going to show NavGraph, and inside the NavGraph we are going to give the okay, this we needed actually here, यहाँ से हम इसे cut कर देंगे Ctrl X, and then here we gonna paste, right, and so we have pasted here,
and we are going to call the main screen right here. So main screen को यहाँ पे call कर देंगे, right? So we have done it, and now we are going to build our splash screen. Splash screen को हम लोग build करने वाले हैं. That is a splash screen. Composable लगाते हैं सबसे पहले. Composable we needed here, and after that we need the function here, splash screen, and then what we needed here, the box, right? Box we needed, and then the modifier we have to give here. Modifier is equals to modifier dot fill max size, and then outside of that Control Alt L करके हम इसे थोड़ा organize करते हैं code को, and after organizing the code we needed here the background. Okay, so let me give it a background, and the background would be the color is equals to color dot black, color dot black, and then outside of that what we needed, content alignment is equals to alignment dot center. So we have taken this, and we have to give it a scope, so error will go away. Okay, and then inside this box what we needed is here we needed the column. We need a column, and inside the column we have to give the some parameters. We have to modify it, so we are going to give the horizontal alignment is equals to alignment dot center horizontally, and then we needed here the another parameter, that is vertical arrangement is equals to arrangement dot center. This we needed, so we have got it. And now inside the column scope we need the image here, image, and that's needed type of the painter here. We need a painter is a painter resource. Okay, painter resource we need it, and then inside the painter resource what is required here, we needed to give the id, and id would be the r dot drawable, right? And dot here we don't have the image, so we needed here the icon of the app. So what we are going to do, we are going inside the here we have the icon, this you have to download this icon. Okay, so you can put any icon here. So it is splash screen icon. I'm going to copy it, and I'm going back inside it, and then I'm going to do what we are going to do, we are going to give it a okay. Inside this rest folder you can see right here the drawable folder. Here you have to paste that icon. I have just copied, and you have to just paste it here as it is. It will fetch the name उसने क्या fetch कर लिया, and then we have to click on the okay. As you would click okay, you will get here this icon, and also here also you will find this dot the phone icon. Okay, so you will get it the icon. So now after this, as you get the icon, what we are going to do, we are going to give it a, let me first organize this. Okay, we have organized, and then inside it we needed a few things. Let me give it, that is that the first thing. Okay, let me go back, and we have to give here the content description, right? Content description we have given here, and यहाँ पर हमने splash screen also we have given. So that's we have done. Okay, and after this what we needed, image, right? And we needed here the padding as well. So modifier dot background dot black we have given, and we have to give here first the size. Let me give it a size, and dot size हमें चाहिए around 300 dp. Okay, so we have taken the size here, and then we needed the padding as well here. So padding we needed around the 15.dp padding. Okay, so now it is fine. Color is equals to, we have given the black, so painter resource background color. So that's we don't need it actually. If you want to give it, that's fine. If you don't want to give it, so that's also okay. So that's we have taken. Now after this what we are going to do, we have given the image, we are going to take the basic text.
that is the basic text, and text is equals to we're going to take the welcome to the 1 minute, welcome to the contact saver. Okay, so we have got this as well. And after this, inside the basic text we need a few parameters also, so that's we're going to give here. And we need a style of the text, that will be the material, not mat, material. Theme dot typography dot label large dot copy we needed here, and inside the copy we needed the color is equals to color dot white. And then we needed here the font size is equals to 18.sp, and that's we need it. And then okay, we have to import it first. Let me import that sp, int.sp we have imported. And then text align we needed here is equals to text align dot center we have got, and that's how we have done it. Okay, text align we have got it. And after this, all of the things, as we completed this basic test, right, we have completed our whole splash screen, and now we're gonna run the app, and let's see splash screen comes or not. So as you can see right here, we got the splash screen, right, and after that we got here the our app main screen. So that is looking so cool. And what we have to do first, and that's we are going to first, what you are going to do, image, okay, splash screen dot background. Okay, that's we have got, and everything looks so cool, right? So we are going to do first thing is we are going to, what, I just forget the name of that. Okay, we are going to change the icon name. So what we are going to do, we are going back, and back जाने के बाद, as you can see here, there must be our app. Where is that app? Where is our app? This is our app, right? As you can see, this is our app, right? Welcome to the contact saver. And as you can see, right, and if I go back again, and if I show you the name of the app, right, if I show you the name of the app, that is the contact app, and this the icon on. So that both of the things we are going to change. Icon भी हम change करने वाले हैं. So how you can change the icon? Again, you have to go inside the map, and you have to select, you have to go inside it, and you have to select the image asset, right? As you would select the image asset here, as you can see, this is the folder path. You have to define the folder path, and you have to find your icon. So we have icon in the D folder. So let me go inside the D folder. Here is the D folder, and you have to find the phone icon. This is here is the phone icon. So I'm going to select it, and as you can see, this is we have got, and we have to adjust it, right? So we have adjusted, okay, we have adjusted it, right? And then what we needed here, we have to first change the background we needed here, the black. So I'm going to change the background as well. So we are going to give it a background like black background we needed, and then it's okay, it's look good. And after that, what we're going to do, we are going to do the next. So our icon has changed, right? We have to finish it. Okay, so as you would finish, your icon would be changed after running the app. And also, let me change the first thing, let me change the name of the app.
that is in the string XML, as you can see right here. So we are going to keep it context saver. Okay, so here we have changed the name of it, and now it will reflect after running. So let's run the app and see it will change or not. So as you can see right here, our app icon has changed, and also the name also had changed. So we have completed our app. So one thing you have to change here, you have to give the padding here, the and is equals to 15.dp, and now I'm going to run it again. And app icon we have changed, right? We have changed the name of the app, everything we have changed. The last time I'm going to show you this everything. So as you can see here, we got the splash screen, and then we have got the here app. And if I go back and if I show you our app, that's you can see right here, our app icon has changed and the name also got changed. So everything we have done, right? So our app is looking so cool. And so if you get any value out of this video, so please don't forget to hit the like and subscribe button. Have a nice day. We'll meet in the next one.